Assalamu alaikum level 10 student, this is your second lecture, and in our previous lecture we have started unit 4 first aid, and we have discussed its first paragraph. So today we are going to start second paragraph, cuts and scrapes, zakham or kharashe. Important paragraph: handling minor accidents at home or on the road develops a sense of crisis management. हैंडलिंग निपटना, माइनर एक्सीडेंट्स मामूली हादसात, छोटे छोटे हादसात एट होम घर पर और ऑन द रोड या सड़क पर, डिवेलप्स बढ़ाता है, अ सेंस समझ बूझ, किस बात की समझ बूझ, अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, हंगामी हालात से निपटने की समझ बूझ। गाड़ियाँ सड़क पर मामूली हादसात से निपटना, हंगामी सूरत हाल से निपटने की समझ बूझ पैदा करता है या हंगामी सूरत हाल से निपटने की समझ बूझ को बढ़ाता है। This may prepare people to tackle with unexpected emergencies with great confidence. This may prepare people, ये लोगों को तैयार कर सकता है, to tackle, संभालने की, with unexpected emergencies, गैर मुतवक्का हंगामी सूरत हाल, with great confidence, नहायत एतमाद के साथ। ये लोगों को गैर मुतवक्का हंगामी सूरत हाल से नहायत इत्मीनान से पेश आने के लिए लोगों को तैयार कर सकता है। Minor cuts and scrapes usually do not need to go to the emergency room. Minor cuts मामूली ज़ख़म and scrapes और खराशें usually do not need, अमूमन ज़रूरत नहीं होती, to go to the emergency room, तिब्बी इमदाद के कमरे में जाने की या एमरजेंसी के कमरे में जाने की। मामूली ज़ख्मों और खराशों से अमूमन एमरजेंसी के कमरे में या इब्तदाई तिब्बी इमदाद के कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं होती। Yet proper care is essential to avoid infection or other complications. Yet फिर भी प्रॉपर केयर, मुनासब हिफाजत, मुनासब निगहदाश्त, इज़ एसेंशियल, ज़रूरी है, टू अवॉइड, बचने के लिए, इन्फेक्शन या जरासीम ज़दगी, और अदर कॉम्प्लिकेशंस, दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए। ताहम इन्फेक्शन या दूसरी पेचीदगियों से महफूज रहने के लिए मुनासब निगहदाश्त ज़रूरी है। फॉलोइंग गाइडलाइंस कैन हेल्प यू to handle crisis and take care of all. Following guidelines, मुदर्जा झेल रहनुमाई, can help you, आपकी मदद कर सकती है, to handle crisis, हंगामी सूरत हाल से निपटने में, and take care of all, और सबकी देखभाल करने में। मुदर्जा झेल रहनुमाई हंगामी हालात से निपटने और सबकी देखभाल करने में आपकी रहनुमाई कर सकती है, आपकी मदद कर सकती है। Stop the bleeding. Minor cuts and scrapes usually stop bleeding on their own. Stop the bleeding, खून के बहाव को रोकना। Minor cuts मामूली ज़ख़म and scrapes और खराशें usually stop bleeding on their own. मामूली ज़ख़मों और खराशों से अमूमन खून बहना खुद ब खुद बंद हो जाता है। If they don't apply gentle pressure with a clean cloth or bandage. If they don't, अगर ऐसा नहीं होता, apply gentle pressure, हल्का सा दबाव रखें, with a clean cloth, साफ़ कपड़े के साथ, और bandage या पट्टी के साथ। अगर ऐसा नहीं होता तो एक साफ़ कपड़े या पट्टी के साथ हल्का सा दबाव डालें। Hold the pressure continuously for 20 to 30 seconds. प्रेशर दबाओ, कंटिन्यूसली मुसलसल, दबाव को मुसलसल 20 से 30 सेकंड तक डाले रखें।
اینڈ اف پاسبل ایلیویٹ دا وونٹ، ایلیویٹ اٹھانا، اونچا کرنا، اور اگر ممکن ہو تو زخم کو اونچا کر دیں۔ دباؤ 20 سے 30 سیکنڈز تک مسلسل ڈالے رکھیں، اور اگر ممکن ہو تو زخم کو اونچا کر دیں۔ ڈونٹ کیپ چیکنگ to see if the bleeding has stopped because this may damage or dislocate the clot that is forming and cause bleeding to resume. Don't keep checking، مت دیکھتے رہیے to see if the bleeding has stopped، آیا کہ خون کا بہاؤ رک گیا ہے، because کیونکہ this may damage، یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، or dislocate the clot، یا لوتھرے کو اس کی جگہ سے ہٹا سکتا ہے، دیٹ از فارمنگ، جو بن رہا ہوتا ہے، بننے والے لوتھرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا اس کو اس کی جگہ سے ہٹا سکتا ہے، اینڈ کاز بلیڈنگ ٹو ریزیوم، اور خون کے پھر سے اخراج کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ مت دیکھتے رہیے کہ آیا کہ خون کا بہاؤ رک گیا ہے، کیونکہ یہ بننے والے لوتھرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا اس کو اس کی جگہ سے ہٹا سکتا ہے اور خون کے پھر سے بہاؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ If blood spurts are continuous flowing after continuous pressure, seek medical assistance. If blood spurts، اگر خون پھوٹتا ہے، اور کنٹینیوس فلوئنگ آفٹر کنٹینیوس پریشر، یا مسلسل دباؤ کے بعد بھی مسلسل بہتا رہتا ہے، سیک میڈیکل اسسٹنس، تو طبی امداد تلاش کریں، طبی امداد حاصل کریں۔ اگر مسلسل دباؤ کے بعد بھی خون پھوٹتا ہے یا مسلسل بہتا رہتا ہے تو طبی امداد لیں، تو طبی امداد حاصل کریں۔